Hello and welcome to English Academy. In today's session, we'll be discussing this poem. The title is Skimbleshanks, the Railway Cat, written by T.S. Eliot. This poem is in the syllabus of ICSE Class 9, taken from the Treasure Chest book. तो हम यहाँ पर देखेंगे इस पोएम की एक्सप्लेनेशन, इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स एंड द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड. First of all, let us see the title. Skimbleshanks is the name of a cat, and the cat works for the railways in Europe. And here the poet is telling us about the cat and what role the cat plays in its job at the railways and how important the cat is. So let us start reading this poem. There's a whisper down the line at 11:39 when the night mail is ready to depart, saying, Skimble, where is Skimble? Has he gone to hunt the thimble? We must find him or the train can't start. Now here whisper is a murmur, means आप लो वॉइस में कुछ बोल रहे हैं. थिम्बल क्या होता है, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, एक छोटा सा प्रोटेक्टिव पीस है मेटल का जिसे आप फिंगर पर पहनते हैं ताकि आप जब नीडल से स्विंग का काम कर रहे हैं तो वो नीडल आपकी उंगली में चुभ ना जाए. यहाँ पे थिम्बल वर्ड क्यों कहा गया है, वो कहना चाहते हैं कि कोई छोटी सी चीज. सो इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट लाइन यहाँ पे है रेलवे लाइन. रेलवे लाइन पर 11:39 बजे हैं और विस्पर हो रही है, मीन्स लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे हैं. वो क्या बात कर रहे हैं कि अरे 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 स्किम्बल कहाँ है, स्किम्बल कहाँ है, उसे ढूंढो. हमारी जो नाइट मेल ट्रेन है वो डिपार्ट करने के लिए, स्टेशन से चलने के लिए तैयार है, लेकिन स्किम्बल नहीं मिल रहा, उसके बिना ट्रेन नहीं जा सकती, तो हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा. तो कोई कहता है कि क्या वो कोई थिम्बल को हंट करने गया है, मीन्स क्या स्किम्बल हंटिंग करने के लिए गया हुआ है क्योंकि वो मिल नहीं रहा. Then in the next lines the poet says, all the guards and all the porters and the station master's daughters, they are searching high and low, saying, Skimble, where is Skimble? For unless he is very nimble, then the night mail just can't go. High and low means at all places, सभी जगह वो ढूंढ रहे हैं. And nimble is quick and light in movement, जिसे हम agile भी कहते हैं. तो जितने भी वहाँ स्टेशन पे गार्ड्स हैं ट्रेन के, जितने पोर्टर्स हैं, कूली हैं, स्टेशन मास्टर की बेटी है, सब इधर उधर सभी जगह पर स्किम्बलशैंक्स को ढूंढ रहे हैं. और वो कहते हैं कि स्किम्बल बहुत ही निम्बल है, यानी कि बहुत ही तेज तेज और बहुत ही फुर्तीला है, तेज तेज इधर उधर घूमता रहता है और उसके बिना नाइट मेल स्टेशन से नहीं चल सकती, इसीलिए वो बहुत ज्यादा फ्रैंटिक है, बहुत ही क्यूरियस है उसे ढूंढने के लिए. Then further the poet says, at 11:42 then the signal's nearly due and the passengers are frantic to a man. Then Skimble will appear and he'll saunter to the rear, he's been busy in the luggage van. Frantic means quite restless. Saunter means walk in a slow, relaxed way. Rear is the back side. फिर वो कहते हैं कि जब 11:42 हो गए हैं, पहले 11:39 था टाइम, अब 3 मिनट निकल चुके हैं, 11:42 हो गए हैं और ट्रेन के चलने का समय हो गया है. सिग्नल इज ड्यू मीन्स उसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, अब उसे वहां से चलना चाहिए. और जितने भी पैसेंजर्स हैं वो भी बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ट्रेन के चलने में लेट हो रहा है, डिले हो रहा है. और फिर पोएट कहते हैं कि तभी स्किम्बल कहीं से एकदम से अपीयर कर जाता है और वो बहुत ही स्लो रिलैक्स वे में चल के ट्रेन के पिछले हिस्से में बैठ जाता है. और फिर वो बताता है कि वो लगेज वैन में बिजी था, इसी वजह से वो लेट हो गया. तो जस्ट एन मोमेंट पर जब ट्रेन एकदम चलने ही वाली होती है और उसको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तब अचानक से स्किम्बलशैंक्स अपीयर करता है, बहुत ही रिलैक्स वे में चलता है और ट्रेन के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है और बताता है कि वो लगेज वैन में बिजी था. He gives one flash of his glass green eyes and the signal goes all clear. And we're off at last for the northern part of the northern hemisphere. तो वो अपनी हरे रंग की आंखों के साथ सिग्नल देता है, इशारा करता है कि सब ठीक है, ट्रेन चल सकती है. और पोएट कहते हैं we're off at last means finally ट्रेन स्टेशन से चल पड़ती है. और ट्रेन कहाँ जा रही है?
नदर्न पार्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न पार्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर से उनका मतलब है कि ब्रिटेन का जो बिल्कुल नदर्न पार्ट है, एकदम ऊपर वाला एरिया है, जो नॉर्थ पोल के बिल्कुल करीब है, ट्रेन वहां जा रही है। तो स्किम्बलशैंक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही वो अपनी हरी हरी आंखों से इशारा करता है, वो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तभी ट्रेन स्टेशन से चल पड़ती है। You may say that by and large it is Skimble who's in charge of the sleeping car express. From the driver and the guards to the bagman playing cards, he will supervise them all more or less. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि तुम कह सकते हो that Skimbleshanks is in charge of this train, sleeping car express. ये जो ट्रेन है ये एक एक्सप्रेस है, मीन्स ये फुल स्पीड पर जाती है नॉन स्टॉप, और ये स्लीपिंग कार है, मीन्स इसमें इस पे पैसेंजर्स लेट कर ट्रैवल कर सकते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ट्रेन का जो ड्राइवर है, ट्रेन के जितने भी गार्ड्स हैं, जितने भी बैगमैन हैं, वो सब कार्ड्स खेलते हैं, और ये जो स्किम्बलशैंक्स है इसकी ड्यूटी है वो इन सब पर निगरानी रखता है। सो स्किम्बलशैंक्स इज इन चार्ज ऑफ दिस ट्रेन। Then he says, down the corridor he paces and examines all the faces of the travelers in the first and the third. He establishes control by a regular patrol and he'd know at once if anything occurred. Patrol is the act of going around an area to see if everything is fine. तो ये जो हमारा स्किम्बलशैंक्स कैट है ये क्या करता है, ये पूरी ट्रेन के जो कॉरिडोर है उसमें चक्कर लगाता रहता है, सब लोगों के पैसेंजर्स के चेहरे देखता है, ये देखने के लिए कि क्या वो कोई क्रिमिनल्स तो नहीं है, चोर उचक्के तो नहीं है। और फर्स्ट थर्ड जितने भी अलग अलग लेवल्स की बोगीज हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, उन सभी में स्किम्बलशैंक्स घूमता है और पैट्रोलिंग करता है, निगरानी रखता है, और वो इस तरह पूरी ट्रेन पर कंट्रोल रखता है, सभी पैसेंजर्स पर कंट्रोल रखता है। और अगर कोई भी हादसा होता है तो स्किम्बलशैंक्स को झट से पता चल जाता है, वो बहुत ज्यादा अलर्ट है। He will watch you without winking and he sees what you are thinking, and it's certain that he doesn't approve of hilarity and riot, so the folk are very quiet when Skimble is about and on the move. Hilarity means amusement involving noisy laughter, means hasna. And riot means unbecoming behavior or chaos, means आपके यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर है वो बहुत कंफ्यूजन वाला है। सो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जब भी स्किम्बलशैंक्स किसी को भी देखता है वो अपनी पलक भी नहीं झपकाता, वो एकदम ऐसे आंखें बड़ी बड़ी खोल कर सबको देखता है, और उसे झट से पता चल जाता है कि किसी के भी दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर किसी के दिमाग में कोई शरारत चल रही है या किसी ने कोई राइट करनी है, मीन्स आसपास के लोगों को परेशान करना है, ट्रेन की शांति को भंग करना है, तो स्किम्बलशैंक्स को ये मंजूर नहीं है। और जैसे ही लोग देखते हैं कि स्किम्बलशैंक्स आ गया है, वो सब बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उसे डिसिप्लिन चाहिए ट्रेन पर, और इसीलिए सब लोग चुपचाप बैठ जाते हैं ताकि उसे कोई भनक ना पड़ जाए कि वो कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। You can play no pranks with Skimbleshanks. He's a cat that cannot be ignored, so nothing goes wrong on the Northern Mail when Skimbleshanks is abroad. Pranks means ट्रिक्स, यानी कि शरारतें करना। सो द पोएट सेज कि जब स्किम्बलशैंक्स आपके आसपास है तब आप किसी भी तरह की शरारत नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसी बिल्ली है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो बहुत ज्यादा अलर्ट है और वो ये देखती है कि नदर्न मेल ट्रेन पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और जब स्किम्बलशैंक्स नदर्न मेल ट्रेन पर है तो उस ट्रेन पर कोई गड़बड़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अलर्ट है। Oh, it's very pleasant when you have found your little den with your name written up on the door, and the berth is very neat with a newly folded sheet and there's not a speck of dust on the floor. Den is a small cabin and berth is a seat to sleep on. तो यहाँ पे वो नाइट मेल ट्रेन के बारे में हमें बता रहे हैं कि जितने भी पैसेंजर्स ट्रेन में बैठते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब वो देखते हैं कि उनका एक छोटा सा कैबिन है, और कैबिन के बाहर डोर पर ही उनका नाम लिखा हुआ है, उनके नाम का टैग लगा हुआ है कि ये कैबिन किसके लिए है।
एंड जो बर्थ है ट्रेन का, जो जिस पर वो बैठ के ट्रैवल करेंगे, जिस पे वो लेट कर ट्रैवल करेंगे, वो बहुत ही साफ सुथरा होता है, बहुत ही अच्छी नई नई शीट उस पर बिछाई जाती है और फर्श बहुत साफ है, उस पे हल्की सी भी डस्ट नहीं है. सो इज ट्राइंग टू से दैट वेरी हाई स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड इन दिस ट्रेन. There is every sort of light. You can make it dark or bright. There's a handle that you turn to make a breeze. There's a funny little basin you're supposed to wash your face in and a crank to shut the window if you sneeze. Crank क्या होता है? It is a bar and handle in the shape of I. ऐसे सीधी शेप का एक बार और हैंडल होता है जिसे आप खींच कर घुमा सकते हैं. तो उससे क्या होगा? जो ट्रेन की खिड़की है उसे आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं. सो यहाँ पे वो फर्दर ट्रेन को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं. वो कहते हैं कि ट्रेन में बहुत ही वैरायटी की लाइट्स लगी हुई हैं, आप उन्हें डार्क कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. फिर वो कहते हैं कि खिड़कियों पर एक हैंडल लगा हुआ है, उसे भी आप घुमाकर खिड़की को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं. अगर आपको हवा चाहिए तो आप विंडो को खोल सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको स्नीज हो रहा है, छींक आ रही है, तो आप विंडो को बंद भी कर सकते हैं. और साथ ही साथ वहां पे एक छोटा सा वॉश बेसिन भी लगा हुआ है जिसपे आप अपना चेहरा भी धो सकते हैं, फ्रेश फील कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट फैसिलिटीज दैट आर प्रोवाइडेड इन द कैबिन ऑफ द ट्रेन. Then he says, then the guard looks in politely and will ask you very brightly, do you like your morning tea weak or strong? But Skimble's just behind him and was ready to remind him, for Skimble won't let anything go wrong. Brightly means cheerfully, बहुत ही अच्छे मूड में. तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि ट्रेन में एक और सर्विस भी है. जो ट्रेन के गार्ड्स हैं वो आपके कैबिन में आते हैं और आपसे बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता के साथ पूछते हैं कि क्या आपको आपकी चाय वीक चाहिए या स्ट्रॉन्ग, कि क्या आप लाइट पियेंगे चाय या फिर स्ट्रॉन्ग ज्यादा पत्ती वाली चाय पियेंगे. और फिर वो कहते हैं कि इसी गार्ड के पीछे स्किम्बलशैंक्स भी होता है और वो उसे याद दिला देता है कि तुमने ये चीज हर पैसेंजर से पूछनी है कि उन्हें उनकी मॉर्निंग टी कैसी चाहिए, क्योंकि स्किम्बलशैंक्स बहुत पर्टिकुलर है और वो किसी भी तरह की गलती नहीं होने देता इस ट्रेन पर. And when you creep into your cozy berth and pull up the counterpane, you ought to reflect that it's very nice to know that you won't be bothered by mice. Now here creep into means move softly, means आप धीरे से घुस जाते हैं अपनी berth में. Berth is that this flat bed type on which you travel. And cozy is comfortable. Reflect means to think. Bothered means to be troubled by something. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जब आप ऐसे क्रॉल करके अपनी बर्थ में घुस जाते हैं जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है और अपना जो खिड़की का और अपनी जो विंडो है उसका पेन बंद कर देते हैं, तो आप यही सोचते हैं कि ये ट्रेन बहुत अच्छी है और आपको ये भी पता है कि ट्रेन इतनी साफ सुथरी है कि आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, ना तो कोई चूहे आएंगे आपको तंग करने के लिए. Then further he says, you can leave all that to the railway cat, the cat of the railway train. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप तसल्ली से इस ट्रेन में ट्रैवल कीजिए क्योंकि इस ट्रेन की जिम्मेदारी रेलवे कैट पर है, यानी कि स्किम्बलशैंक्स पर है और वो उसे कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन भी कहते हैं. Then he says, in the watches of the night he is always fresh and bright. Every now and then he has a cup of tea, with perhaps a drop of scotch while he is keeping on the watch, only stopping here and there to catch a flea. Watches means acts of watching carefully and flea is a blood-sucking insect. तो कह रहे हैं कि रात के समय भी स्किम्बलशैंक्स बिल्कुल फ्रेश रहता है, बहुत ही ब्राइट रहता है और वो अपने आप को अलर्ट रखने के लिए बार बार चाय पीता रहता है. और वो कहते हैं कि शायद वो अपनी चाय में थोड़ी सी स्कॉच यानी कि थोड़ा सा अल्कोहल भी मिला लेता है, क्योंकि उससे क्या बेनिफिट होगा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन स्किम्बलशैंक्स ऐसा करता है और वो इधर उधर जितनी भी मच्छर मक्खियां उड़ रही होते हैं उन्हें भी पकड़ लेता है ताकि उनसे भी पैसेंजर्स को किसी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो. You were fast asleep at crew
And so you never knew that he was walking up and down the station. You were sleeping all the while he was busy at Carlisle, where he greets the station master with elation. Elation means excited, cheerfulness means extremely happy. So now he is talking to the passengers. You here refers to the passenger of the night mail. He says कि तुम तो सो रहे थे गहरी नींद में जब क्रू स्टेशन आया और इसीलिए तुम्हें कभी भी नहीं पता चला कि पूरी रात भी स्किम्बल शैंक्स स्टेशन पर ऊपर नीचे घूम रहा था और जब कार्लाइल स्टेशन आया तो वहां पर भी वो स्टेशन मास्टर से बातें करने में उनसे मिलने में बिजी था तुम तो सो रहे थे इसलिए तुम्हें ये भी नहीं पता. So the poet wants to tell the readers that when the train passes through various stations, even during the night, at that time also Skimbleshanks is awake and alert and he is keeping a watch over the train. He is meeting the station master also, though all the passengers are asleep and so they don't know about this. Then he says, but you saw him at Dumfries, where he speaks to the police. If there's anything they ought to know about, when you get to Gallowgate, there you do not have to wait, for Skimbleshanks will help you to get out. So he says that आपने उसे डम्फ्राइज पर भी देखा था जहां पर वो पुलिस से बात कर रहा था ये जानने के लिए कि क्या कोई ऐसी बात है जो वो पुलिस को रिपोर्ट करना चाहता है. और जब ट्रेन गैलोगेट पहुंची तो वहां पर भी आपको इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि स्किम्बलशैंक्स था आपकी मदद करने के लिए और उसने आपकी मदद की ट्रेन से उतरने में. सो यहाँ पे पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि जो भी पैसेंजर्स हैं उन्हें नहीं पता कि स्किम्बलशैंक्स कितनी मेहनत करता है और उसकी मेहनत की वजह से ही वो कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं इस नाइट मेल में. He gives you a wave of his long brown tail which says, I'll see you again. You will meet without fail on the midnight mail, the cat of the railway train. Wave is movement to say or suggest something. तो कह रहे हैं कि जैसे ही आपका स्टेशन आ जाता है स्किम्बलशैंक्स अपनी लंबी सी ब्राउन रंग की पूंछ को घुमाकर आपको वेव करता है कहने के लिए कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगा. और वो कहते हैं विदाउट फेल मीन्स इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम भी इस मिडनाइट मेल पर ट्रैवल करेंगे तब आपकी रेलवे ट्रेन की कैट से मुलाकात जरूर होगी. सो इसके साथ हमारी पोएम कंप्लीट हो जाती है. नाउ लेट अस डिस्कस द फिगर्स ऑफ स्पीच, द लिटरेरी डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द राइम स्कीम दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस पोएम. राइम स्कीम इज ABCB and in the next stanza it will be DEFE. यहाँ पे देखिए depart and start are rhyming, so these are B, and nine and thimble are not rhyming, so this will be A, this will be C, ABCD. Now at many places you can see enjambment has been used. Enjambment is a device when there is no punctuation mark at the end of a line and the same sentence is continuing in the next line also. There's a whisper down the line at 11:39 when the night mail's ready to depart. So this is one complete sentence. यहाँ पे कोई punctuation mark भी use नहीं हुआ है. So this is the device of enjambment. आप इसे और जगहों पर भी notice कर सकते हैं. Now here we also see alliteration. Alliteration is the repetition of a consonant sound at the start of consecutive words. इस लाइन में देखिए सेइंग, स्किम्बल, स्किम्बल, यहाँ पर स साउंड रिपीट हो रहा है इन वर्ड्स की स्टार्टिंग में. दिस इज द डिवाइस ऑफ एलिट्रेशन. देन वी ऑल्सो सी पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन हैज बीन यूज्ड थ्रू आउट द पोएम. पूरे पोएम में ही हम कह सकते हैं कि स्किम्बलशैंक्स को पर्सोनिफाई किया गया है, उसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है. यहाँ देखिए we must find him or the train can't start. So here him refers to Skimbleshanks. This is the device of personification. Now in the next stanza also the same rhyme scheme has been used. Low and go are rhyming. So again ABCB. Then we also see internal rhyme. काफी सारी लाइन्स में इंटरनल राइम यूज हुई है जिसे कि हम रिदम कहते हैं और वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ देखिए पोर्टर्स एंड डॉटर्स आर राइमिंग. दिस इज रिदम, द इंटरनल राइम. देन स्किम्बल एंड निम्बल आर राइमिंग. एंड अगेन वी कैन सी enjambment over here.
High and low is the use of the device of antithesis, that is the use of opposite words. Again we can to see alliteration over here. Then the, ये दोनों words the sound से शुरू हो रहे हैं, this is also alliteration. Now we move to the next stanza. Same rhyme scheme has been used. Man and van are rhyming, so A, B, C, B. Again we see enjambment. There is personification also, alliteration also, being, busy. B sound is repeating at the start of these two words. There is internal rhyme also. Appear and rear are rhyming. Now in this stanza also, there is the same rhyme scheme. Clear and hemisphere are rhyming. There is the use of anaphora also. Anaphora is a device in which two consecutive lines start with the same word. There is personification also. There is the use of enjambment also. Here in this line, there is the use of the device of hyperbole. Hyperbole is a figure of speech in which exaggeration is used. When the poet says, and we are off at last for the northern part of the northern hemisphere, so he is exaggerating. Now the train actually North Pole की तरफ नहीं जा रही है, वो ग्रेट ब्रिटेन के नदर्न हिस्से की तरफ जा रही है. लेकिन जब वो कहते हैं वी आर ऑफ एट लास्ट फॉर द नदर्न पार्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर, तो रीडर को क्या लगता है नदर्न हेमिस्फीयर का नदर्न पार्ट क्या है, नॉर्थ पोल. But actually the train is going only to the upper part of Britain. So this is the device of hyperbole. Now we see the next stanza. Here also same rhyme scheme has been used. Express and less are rhyming. There is internal rhyme. Large and charge are rhyming. Guards and cards are rhyming. There is the use of enjambment also. Then we also see the use of antithesis over here. More and less are opposite words. This is the device of antithesis. In the next stanza also third and occurred are rhyming. A, B, C, B. Then we also see the use of enjambment. There is personification also. Now we move to the next stanza. Here again, approve and move are rhyming. There is internal rhyme. Winking and thinking are rhyming. Riot and quiet are rhyming. And then we also see enjambment over here. We also see personification over here. Then will watch is alliteration. V sound is repeating at the start of these two words, and again without winking. This is also alliteration. Now in these lines also ignored and abhorred are rhyming. So the rhyme scheme is A, B, C, B. Then the poet has also employed enjambment over here. Then we move ahead to the next stanza. Here also door and floor rhyme kar rahe hain. A, B, C, B is the rhyme scheme. Then over here in this line, the poet has used imagery also. There is visual imagery. We can imagine that the berth of the train has a very new and well folded sheet of cloth. So this is the device of imagery. Then there is use of enjambment, and we also see the use of anaphora in these two lines. In the next stanza also breeze and sneeze are rhyming. Rhyme scheme वही है A, B, C, B. And then there is internal rhyme also. Light and bright are rhyming. Basin and in are rhyming. Then the poet has used anaphora in these three lines, and there is the use of enjambment also and personification also. Further we move ahead to the next stanza. The same rhyme scheme is there. Strong and wrong are rhyming. The rhyme scheme is A, B, C, B. Politely and brightly are rhyming. Then the poet has also employed enjambment and personification. Now in this stanza, the rhyme scheme is A, B, C, C. Nice and mice are rhyming. And the poet has used enjambment. There is the use of anaphora, personification. And we see alliteration over here, be bothered. Now in this stanza, you can leave all that to the railway cat, the cat of the railway train. So here that and cat are rhyming. This is internal rhyme. In the next stanza, the rhyme scheme is A, B, C, B. Tea and flea are rhyming. There is internal rhyme. Night and bright are rhyming. Scotch and watch are rhyming. So there is rhyme and rhythm in this poem.
Then the poet has also used enjambment, he has used personification in this stanza also. And he has also used metaphor. When the poet says in the watches of the night, so he wants to say that late at night. Watches of night means when the time is very late. At that time also Skimbleshanks is very fresh and bright. Now in this stanza also the rhyme scheme is same ABCD. Station and elation are rhyming. There is internal rhyme also. Crew and new are rhyming. While and Carlyle are rhyming. And then there is the use of enjambment. There is the use of personification. There is alliteration also. Was walking. In the next stanza, same rhyme scheme has been used. A, B, C, B, about and out are rhyming. Gallowgate and wait are also rhyming. This is internal rhyme. There is personification. There is enjambment. Here the rhyme scheme is A, B, A, B. Tail and mail are also rhyming. Again and train are also rhyming. Then there is enjambment also. There is alliteration. Midnight mail. Mer sound is repeating at the start of these two words. And there is personification also. And with this we come to an end of this video. We have read this poem Skimbleshanks, the Railway Cat. We have explained the poem to you and we have also discussed the figures of speech that have been used. If you want the lesson notes and the important question and answers of Skimbleshanks, the Railway Cat and other chapters of class 9, you can check out the links which are given in the description box below this video. Thank you for watching this video and if you liked it, do give us a thumbs up and share this video with your friends. Thank you.